Warm welcome, viewers. You're watching 7 at 7, the only news bulletin where I curate the day's top 7 stories for our viewers. I'm Preeti Choudhry and these are the headlines. High drama in Telangana ahead of key by-poll. Cyberabad police arrest 3 people after 4 TRS MLAs claim BJP made attempts to poach them. BJP refutes charges, calls it desperate poll stunt by KCR. Amidst protests and black flags, Kejriwal visits the Ghazipur landfill and fires blistering attack at BJP over Delhi garbage crisis. Claims Saffron Party protecting garbage mafia for the last 16 years. बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दें इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो. 3 years in jail for Samajwadi Party Neta Azam Khan over hate speech against Yogi Adityanath and violating the MCC. Controversial leader has over 90 cases against him for extortion, criminal conspiracy and theft. Chhath Puja politics peaks. BJP up Sante against Kejriwal government over polluted Yamuna water. Accuses the Aam Aadmi Party of putting lives at risk of devotees. In midst of a spate of Hindu killings and Kashmiri Pandits' exodus, NC patron Farooq Abdullah makes a big claim. Tells India Today Kashmir will become Hindu-less if immediate measures are not taken. Elon Musk visits Twitter headquarters with a sink in hand. Says let that sink in as deadline to take over the microblogging site nears. It's a huge move, viewers, especially at a time where even though the BCCI might be a commercial organization, but if the women of this country are going to play for India, if the men and the women of their country will have the same jersey which says India behind it, then why is it that women would get paid lesser, way lesser than the men's cricket team? Many would say for commercial purposes, but you're playing for the country should pay you equally, be it women or men, per match fee. Joining me right now is Poonam Yadav. She's a leg spinner with the Indian cricket team. She's a formidable wicket taker for the Indian women cricket team. Poonam, बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ रहे हो. आप एक प्रैक्टिस सेशन के लिए बैंगलोर जा रहे हो. मुझे पता है आप एयरपोर्ट पे बैठे हो. बहुत शुक्रिया आप हमसे लाइव जुड़े. पूनम, बहुत पहले से ये बात चली आ रही है. आप अपनी खुद की स्टोरी को ले लीजिए. जब आर्थिक दिक्कत आपको थी, जब अब पर मैच फी, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, पहला मैच में जब आप खेलते, अगर जब मेन खेलते थे, वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं, उनको 6 लाख रुपए मिलते हैं, आपको उसका 1 लाख या 1 लाख से कम मिलता था. अब उतना ही मिलेगा. पूनम, कैसे देखती हैं इसे? फाइनेंशियली मुझे लगता है लड़कियां अभी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और लोग अपना फ्यूचर देखेंगे. जैसे पेरेंट्स थोड़ा हेजिटेट करते थे क्रिकेट खिलाने के लिए लड़कियों को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे आप वेल सेटल्ड हो सकते हैं. फ्यूचर है आपको क्रिकेट में. लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे खेलने के लिए. मुझे यहाँ तक लगता है कि पहले थोड़ा सा सोचते थे, हेजिटेट करते थे कि नहीं बच्चे फाइनेंशियल, मतलब इसमें क्या स्कोप है क्रिकेट में, बस एक आपका डोमेस्टिक खेलोगे उससे ज्यादा क्या होगा. मतलब लाइक अगर ये लेवल पे अगर सेम पेमेंट किया गया तो आप समझ लीजिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. हम लोग जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया था और कुछ भी फाइनेंशियली ऐसा हेल्प नहीं. पूनम, आपने सही कहा, क्योंकि जब आप एक भारत की जर्सी पहनती हैं, एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, पर उसमें जो मशक्कत चढ़ती है, जो उसमें मेहनत जाती है, जो उसमें आपकी पूरी फैमिली का आर्थिक सपोर्ट जाता है, वो अब आपको लगता है थोड़ा अब्जॉर्ब हो पाएगा. आपके पेरेंट्स हैं जैसे, और जो महिलाओं के जो अपकमिंग स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, जब एटलीस्ट बोला जाएगा कि जितने मैच में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है आपको उतना ही पैसा मिलेगा. घर पे अगर ये ट्रिकल डाउन होगा, कितनी मदद होगी? जी, कहीं ना कहीं पहले पेरेंट्स बहुत ज्यादा हेजिटेट करते थे अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए, और जब हमने खेलना स्टार्ट करा था तो हम लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे. तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे. फ्यूचर है लड़कियों का क्रिकेट में कि आप फाइनेंशियली अगर देखेंगे तो मेंस और वुमेन्स अभी एक ही दर्जे पे आ गए. तो बहुत बड़ा एक पड़ाव हो सकते हैं जो बीसीसीआई ने लिया है. तो मैं उसको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि
बहुत टाइम से हम इस चीज का वेट कर रहे थे और बहुत सालों से हम अच्छा करते हुए आ रहे हैं इंडिया टीम के लिए, वुमेन्स टीम के साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे मेन भी हैं, मुझे लगता है, जो थैंक्स बोलेंगे बीसीसीआई को। कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी है फाइनली आप लोगों को। पर उनके बारे में क्या कहेंगी पूनम, जो एक पूरा एक तबका है, एक सेट है जो कह रहा है देखिए जो कमर्शियल वैल्यू है वो एक मेल प्लेयर की, एक आदमी जो खेलता है क्रिकेट उसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनको ज्यादा पैसा मिलता है। चाहे बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, पर कमर्शियल तो है ही, और जो कमर्शियली ज्यादा वायबल होगा, जिसको ज्यादा पैसा जो कमांड करेगा, उसी को जाना चाहिए। उनके बारे में क्या कहेंगे? जी। हम लोग अगर आप देखोगे पास्ट 2-3 ईयर से हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं एज अ इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आप कोई भी आप उठा के देख लीजिए, अगर अभी जो हम लोगों ने इंग्लैंड सीरीज खेली तो उसमें हमने तीनों ओडीआईज इंग्लैंड टीम में जाके हराया, और कॉमनवेल्थ भी ले लीजिए हम उसमें रनर अप रहे हैं, और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप था। तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम बेटर करते हुए आ रहे हैं। और अगर ये जो स्टेप लिया है बीसीसीआई ने, और उसके बाद हम और इससे भी ज्यादा और बेहतर करने की कोशिश करें। आप बेटर करते आ रहे हैं और आप बहुत बेहतर करेंगे। और ये बेंचमार्क भी नहीं होना चाहिए पूनम, जो और स्पोर्ट्स हैं, कि आप बेहतर करें तभी आपको इक्वालिटी मिलेगी, तभी आपको इक्वल पे मिलेगा पर मैच। ये तो गिवन होना चाहिए पूनम, पर आप लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। अब मुझे बताइए पूनम, आप अभी भी एक एक्टिव क्रिकेटर हैं, जो भारतीय महिलाओं की टीम के लिए खेलती हैं, लेग स्पिनर है, उसी की प्रैक्टिस के लिए जा रही हैं, एयरपोर्ट पे बैठी हैं। मुझे बताइए अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा कितना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट एक खिलाड़ी के लिए, जो आप इंटरनेशनल स्तर पर खेलती हैं, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पूनम? फाइनेंशियली अगर देखिए, अगर मैं अगर अभी इंडियन टीम में आती हूँ और फिर से अगर ये चीजें होती हैं, तो सबसे पहले अगर मैं जिसको फैसिलिटीज दे सकती होंगी मैं उनको दूंगी, और अपना गेम और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि जब मैंने खेलना स्टार्ट करा था तब इतनी फैसिलिटीज नहीं था, इतना पैसा नहीं था। इतनी से हम लोग को 6 लाख रुपए मिलता है, तो समझ लीजिए मतलब अगर मैं अपने क्रिकेट के लिए अपनी फिटनेस वाइज मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो सकती हूँ, और अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करेंगे इस पैसे से। पूनम, आपने हमें बताया कि आपको ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आप इसका क्या करेंगी? अपनी फिटनेस पे, अपने न्यूट्रिशन पे स्पेंड करेंगी। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है आपने भी, क्योंकि मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी पूनम इस इंटरव्यू के पहले। एक छोटे से गांव से आती हैं आप, फाइनेंशियली बहुत इंस्टेबिलिटी देखी है आपने, पर तभी भी आपने आगे जाकर अपने पेरेंट्स के, आपने हमेशा अपने पेरेंट्स को ड्यू दिया है, कि आप आगे बढ़ती रही हैं। आप अपनी कहानी बताइए पूनम, कितनी डिफिकल्ट रही है इस मौके तक आने के लिए कि आपको फाइनली इक्वल पे मिले और वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जो बहुत बहुत जरूरी है एक खिलाड़ी के लिए। जी। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव बहुत छोटे में है, मैनपुरी गिरोर साइड से बिलोंग करती हूँ मैं। और वहाँ पे तो खैर लड़कियों को 12th के बाद क्या 10th के बाद ही शादी कर दी जाए। तो मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और उन लोगों की अगर उन्होंने मुझे खिलाया नहीं होता और मैंने फोर्स नहीं करा होता कि आप मेरे पे बिलीव करो, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें थी नहीं। तो उस टाइम पे जब मैंने ट्रेन में ट्रेवल करा हुआ है, उस टाइम पे साइकिल चला के जाती थी। और अपना सिनेरियो 2017 के बाद से बहुत ज्यादा सिनेरियो चेंज हुआ है, वरना उससे पहले तो कोई नहीं जानता था, बाय फेस भी कोई नहीं जानता था ना बाय नेम। लेकिन 2017 के बाद से धीरे धीरे क्रिकेट बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत लोग जानने लगे। हम लोग का चेहरा आप जानते हैं, अगर आप कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं बहुत लोग पहचानते हैं। एक क्रिकेट में हम लोग को नाम नहीं है। पूनम यादव, आप लेग स्पिनर हैं, आपको सब जानते हैं। अब बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, प्रैक्टिस सेशन के लिए जा रही हैं। जो बाकी आपकी महिलाओं की क्रिकेट टीम है उन सबको बहुत बहुत बधाई दीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में इक्वल पे के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी इक्वालिटी आए, उसमें भी आपको इक्वली उतना ही कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन करें जितने आपके A, B, C ग्रेड के जो मेन प्लेयर है वो करेंगे, और बहुत सारी इंडोर्समेंट्स आपको मिलें कि आप आगे और बढ़े। थैंक यू पूनम कि आप हमसे जुड़े। All right, viewers, that's Poonam Yadav. She's at the Bangalore airport. She's boarding a flight to go for
the practice session for the women's cricket team. It's a watershed moment for women in Indian sport, especially cricket viewers. We're going to keep a keen eye on that, but I want to now quickly shift focus to the other political development that we're tracking very closely, and that comes from the state of Himachal Pradesh. Himachal, with its mammoth 68 seats, is going to polls on the 12th of November, kick-starting with it an election season which will go down all the way till 2024 general elections. The BJP is hoping to repeat its 2017 sweep of the hill state, but in the run-up, it seems all is not well within the BJP Himachal unit. The fire of dissidents brewing within the old BJP war horse, former Chief Minister and father of Anurag Thakur, Prem Kumar Dhumal's camp, with many of his loyalists being denied a ticket, while Dhumal himself forced to bow out of electoral politics as he has crossed the 77 years of age cutoff, which the party's retirement age is. His son, Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, however, got deeply emotional while addressing a public rally in Himachal's Surjanpur. Unable to control his tears, he continued in a very broken, shaky voice, saying this is the constituency where Dhumal, his father, had lost in 2017 and wanted to contest again this time but was not given a ticket. Viewers, what you see on the television screen is, of course, an emotional Anurag Thakur holding his tears, talking about his father, but this also smacks of the fact of an ongoing rivalry between the two Thakur camps that exist between the BJP. Listen it. मित्रों, 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? नहीं बैठे ना। पूरे प्रदेश भर में कोई नेता ऐसा था जो अपना घर छोड़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बावजूद एक आम कार्यकर्ता के रूप में. Let's cut across to our National Affairs Editor, Rahul Srivastav, who's joining me live right now. Rahul, you know, it's very interesting. All's not really well within the BJP camp. We know that, especially the two Thakur camps, Jairam Thakur, the sitting Chief Minister, Mr. Dhumal. Lots of tickets being denied to the loyalists of the former BJP warhorse, Mr. Dhumal, the father of Anurag Thakur. Anurag Thakur literally in tears saying his father wanted to fight but couldn't. Yes, Preeti, definitely. The BJP is in a contest which is purely Congress versus the BJP in a critical stage. Remember, I think Himachal is one of those states where for the last 30 odd years now, there has been a seesaw battle between the Congress and the BJP. The Congress, no party has actually won, sitting party in power has never won an election. And the BJP, like in Uttarakhand, wanted to alter that. But it seems that the BJP's plans have suffered a setback, not just because of the corruption issues which dog the government in Himachal Pradesh. That's one big issue against the government. Then the pension issue is one big one. The infighting in the camps in Himachal Pradesh are a big headache for the party right now. Remember, not just somebody like a Dhumal. In fact, so sidelined was Mr. Dhumal in the entire exercise that 11 odd sitting MLAs were denied tickets. Out of them, one minister was denied ticket, and several people who have been denied tickets are now going to get into the fray, pushed by their respective camps. Now, remember, in a state like Himachal, not only has there been a strong anti-incumbency against any government in power, but also the swings are very strong. In a state like Himachal Pradesh, for example, in 2019, the BJP won nearly 67% of the vote in Himachal Pradesh, while the Congress was, for the first time ever, down to 27. That means there was a 42% gap in the votes. Compared to this, in the bypolls which happened in Himachal Pradesh, 3 assembly and 1 Lok Sabha, that is the Mandi seat, there were very strong changes. 54 to 20% loss of votes for the BJP, and the Congress was a very clear and distinct winner as far as the vote loss of the BJP is concerned. Now, in a scenario where there are very strong mood swings, or say the vote swings, in a state where traditionally votes against the party in power,
in that infighting, denial of tickets and contest by the rebels, and one ex-chief minister sulking and two camps virtually out in the open means terrible news for the BJP. Well, Rahul Srivastava, appreciate you joining us for all that political gyan. The campaigning will pick up, and trust Rahul Srivastava to get us all the very latest. He'll be traveling to the hill state there. With that, I want to now quickly shift focus to the other developing story that we're watching very closely for all of you on Twitter. Elon Musk is going to be taking Twitter over very soon. And this is how he entered the offices of Twitter, with a sing. The meaning of it, let this sink in. Elon Musk at his bizarre best, entering Twitter headquarters carrying a bathroom sink. His weird action explained in part in this tweet. Entering Twitter HQ, let that sink in. But it was the status on his Twitter handle which explained a lot to the public. If letters to financiers informed them of his intention to complete the Twitter deal, it was this status as the chief twit which announced his intentions to the world. Twitter shares have risen more than 7% this week, jumping to close near the $54.20 offered by Elon Musk this April. The company's share price has been seesawing since April when the deal was announced. The highs and lows set by Elon Musk's statements and mood. Trading the stock has been suspended by New York Stock Exchange on Thursday. The stock was at $39.31 on the 1st of April and shot up to $51 in just 2 trading days. However, Musk's refusal to go ahead with the deal saw the stock plunge to new lows in the second week of July. Now, with the deal just a day away from signing, the stock is up again. The deal is backed by some of the biggest banks and global investors. Morgan Stanley and Bank of America have committed $13 billion in debt. Investors, including Oracle co-founder Larry Ellison and Saudi Prince Al-Walid bin Talal, are pitching in with $7.1 billion. There are, however, doubts over the future of Twitter's Indian origin CEO, Parag Agrawal, who has frequently been in Musk's firing line. Agrawal has also not shied away from taking pot shots at Musk in the past 6 months. The cyber world, meanwhile, has exploded with memes. This meme video shows an Elon Musk lookalike on a firing spree with a paintball gun, fulfilling his promise of firing 3/4 of Twitter staff. In reality, he calmed some of the frayed nerves on Wednesday, saying he had no plans to do so. Bureau Report, Business Today TV. Moving on, viewers, disconcerting news. The Russia-Ukraine crisis has entered a rather disturbing phase with threats of a dirty bomb coming to the fore. The Russia-Ukraine war has entered a new phase. A dirty bomb face-off is now unfolding in the war-torn countries. Russia first accused Ukraine of planning to use a bomb laced with radioactive material called a dirty bomb in the Russia-occupied town of Kherson. Kyiv authorities said it openly. They had plans to use the so-called dirty bomb for provocation. Kyiv rejected the Russian claim. It was Russia who used the threat of a radiation disaster at the Zaporizhzhia nuclear power plant as blackmail. While Moscow has flagged its concerns at the UNSC, the West has slammed Russia for its dirty bomb rhetoric. Russia accused Ukraine of preparing to use a radiological dirty bomb. This is absurd. Allies reject this blatantly false accusation, and Russia must not use false pretexts to escalate the war further. The Pentagon too schooled Russia on its dirty bomb allegation.
from a U.S. standpoint, the allegations that Ukraine is building a dirty bomb are false. We have not seen at this time, though, any indication that Russia has made a decision or intends to employ nuclear weapons or a dirty bomb. But again, it's something that we'll continue to watch closely. Russian Defense Minister Sergei Shoigu meanwhile held a video conference with his Indian counterpart Rajnath Singh over the dirty bomb threat. India's defense minister urged both nations to avoid any escalation of the conflict. Amid allegations and counter-allegations over dirty bombs, Vladimir Putin's forces were seen holding massive nuclear drills. President Putin himself supervised military drills reportedly designed to simulate massive nuclear strikes. Bureau Report, India Today. You're watching a fact-check segment where we bust certain claims masquerading to be facts on social media platforms and WhatsApp group. There's a claim, viewers, floating about in the form of a video which suggested that this is the footage of the Kedarnath chopper tragedy. Incorrect. This is actually a 2014 clip of a Russian air show tragedy, nothing to do with India or Kedarnath.